Yeah, friends. So I was telling that festivals are actually part of our life. And you see, everybody is in the mood to celebrate. And like you may say that only Indians are doing it, not the people of other like religion. Even if you see, if you trace back the history, I was like reading in Srila Prabhupada Leelamrit. When Srila Prabhupada was a small boy, he was born in Kolkata, and that time Muslims and Hindus used to stay together, and Hindus used to participate in the festivals of Muslims, and Muslims used to participate in the festivals of Hindus, like that. And what to speak of Diwali, it's a festival which is very famous all around the world, like that. So we'll just try to discuss something on the aspect of Diwali, which is very, very crucial actually, because every year we are trying to celebrate, and in future also we will celebrate, because Diwali is a thing, it's indispensable to us, like Holi, Diwali, and all the other festivals. But what is the essence behind it, and how we can take maximum benefit of it, like that. तो अगर हम उस चीज को भी थोड़ा सा सीख लेंगे, we'll know it, like थोड़ा सा जान लेंगे उस चीज को, then our spirit to celebrate festivals will become complete, like that. So I was just thinking maybe this topic will be most befitting for us today, because the great festival is on the corner, at the corner, like that. So we'll start with short prayers, and then we'll just take it briefly. But we can have very crucial lessons to learn from it. So we'll start with prayers. Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Okay. Yeah, I'll share my screen with all of you. I have a short PPT for all of you to display. All of you can see the PPT now? Yes, Prabhu. Okay, so first of all, happy Diwali to all of you. It's a festival of lights. And yes, definitely, Diwali has its root in Ramayana. Like, why do we celebrate it, and what is the reason behind and all that? So the root of Diwali lies in the great epic Ramayana. And as many of you all might already be knowing the points from the last session which we have taken, the character of the great devotee Hanumanji, like that. So we have seen that, no, the most amazing life of Hanumanji. Now all of you might be having some shades from that session as well, that how Hanumanji is a great devotee and what Ramayana is, what is the essence of Ramayana and all that. So today we'll focus on a very special topic in Ramayana, and that topic I'll not tell you right now. I will share a few points with you, and in the end you have to tell me the topic, like that. So I will show you a few slides, and I'll share a few lessons from Ramayana and from Diwali, and you have to frame one one sentence title for this session. So I have not kept the title here. After you hear everything, then you can tell me in the end what can be according to you, like that. So yeah, friends, so I was telling you the essence of festivals. Actually, festivals are very, very crucial. Like हम लोग को लगता है कि ये तो routine में आते हैं and it comes every year and all, like that. वो है, मतलब वो आते हैं routine में, that's true. But उनके पीछे ना एक बहुत deep essence है, एक बहुत deep meaning है, और एक बहुत deep effect भी है, like that. जैसे हम देखते हैं ना हर एक फेस्टिवल का, तो हम जो भी रिचुअल कर रहे हैं ना, जो भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे एक मीनिंग है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग इट, और व्हाई वी आर डूइंग इट, और उसका एक इफेक्ट भी है. Like, so we have these two words here, why and the effect of that.
So every ritual has a meaning behind it and an effect associated with it, कि हमें उसे करने से क्या हासिल होता है, what benefit we receive in our life after doing that. Yeah, so I was telling you about Deepavali. All the markets are filled with different things to celebrate Deepavali. All the houses are cleaned and people are decorating their houses as beautifully as possible, like that. But the question comes, why? Why we are doing all that? Why the markets are filled with so many crackers and so many things to decorate houses, so many sweets and so many other things like that? In fact, people do big shoppings in this festival. They purchase some big accessories for their houses like TVs and refrigerators and even cars and all like that on a festival like Deepavali. So now the question comes, why we are doing all this, why we are making our house so beautiful, why we are making it very clean, why we are decorating it, why we are lighting the lamps and all. And yes, the obvious reason everybody knows also, to welcome Lord Ram into our house. So now comes the point, why, from where did this point came of welcoming Lord Ram into our house? So the point came right from the pages of Ramayana. And the episode all of you already know, that how Lord Shri Ramchandra, Mother Sita and Lakshman, they went to forest because Lord Ram received the instruction from his father to get exiled like that to forest for 14 years. And Mother Sita and Lakshman also accompanied him, though they were not supposed to accompany Lord Ram. Only the instruction was for Lord Ram that he will be banished for 14 years. But out of intense love of Mother Sita and Lakshmanji, they also accompanied Lord Ram like that. Especially Mother Sita, she accompanied because she is the wife of Lord Shri Ramchandra, and Lakshmanji accompanied simply to serve Lord Ram like that. So now why we are doing all of that, why we are doing this cleaning, this decorating, and why we are sharing sweets with neighbors and all that. So why this entire, how this entire culture came into picture is to invite actually, or I should say to welcome Lord Shri Ramchandra into our house. And from where this point of welcoming came, this is the very day when Lord Shri Ramchandra, along with Mother Sita and Lakshman and many monkey soldiers, he returned back to Ayodhya after completing his entire tenure of 14 years of exile and killing the most, what we say, barbaric demon Ravana on the planet of Earth at that time, like that. So he was the person who was most barbaric, most demoniac personality. So Lord Ramchandra killed him also, and then he has completed the tenure also of his 14 years, and then he came on that day like that. तो मतलब इसका शेयरिंग का मैं आपको शेयर करता हूँ पॉइंट. ये पॉइंट मैंने क्यों एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि वी शुड बी इन दिस कॉन्शियसनेस. मतलब एटलीस्ट हमारे मन में एक टाइम के लिए ये पॉइंट तो होना चाहिए कि ये सब क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रूट बिहाइंड इट, उसका फाउंडेशन क्या है, ये जो पूरी बिल्डिंग है दीपावली की, इसका फाउंडेशन क्या है. एंड द फाउंडेशन इज एक्चुअली दिस पास्ट टाइम. Yeah. Like this. So now I'll share, my dear friends, with you a very special thing from Ramayana. Like if you remember, last time I have shared with all of you the character of Hanumanji. Today also I'll share a very practical lesson for our life. So in case you want to take some notes, it's up to you, but it will be very helpful in your life ahead as a student in BTech, and then ultimately also being a working professional and that way. Yeah. So now comes, yeah, so this theme we'll see now, the secret of life balance. Actually, if you see the entire festival of Deepavali and the essence of Ramayana, it translates into our life in practical terms as the secret of life balance. Now, as I was sharing last time also, like all of you also have some idea, this Ramayana, Ramayana is very close to our hearts actually. All the people, they find great connection with all the characters of Ramayana. Like we have Maharaj Bharat, we have Lakshmanji, we have Shatrughan, and we have Lord Ramchandra himself. तो हम जब उनके बारे में सुनते हैं, उन्होंने किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट किया और उन्होंने किस व्यक्ति के साथ किस तरह की डीलिंग्स की, तो हम जब ये सब चीजें सुनते हैं, then our heart is so much touched by all of that.
And that is the reason, like I was sharing last time also, people appreciate this entire episode of Ramayana so much. Like that, people appreciate it so much that it is there from the time of Treta Yuga. And when Lord Krishna came in Dwapar Yuga, everyone used to have habit of hearing Ramayana every day. And then even if you see in this age of Kali Yuga, it has just begun. Like if you see, the age of Kali Yuga is 4,32,000 years, and only 5,000 years have passed. And if you see your elders, they had habit actually of hearing Ramayana. Of like, if you go in the villages, like अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो लोग राम राम बोलते हैं एक्चुअली. लाइक वो बोलते हैं राम राम भाई, राम राम ताऊ जी, राम राम पापा जी, लाइक दैट. सो दे स्टार्ट देयर कॉन्वर्सेशन लाइक दैट, राम राम. नाउ अभी आप देखेंगे कि ये जो कल्चर है, ये आया कैसे है. ये कल्चर आया ही ऐसे है because everybody used to value the spiritual culture very much. In fact, spirituality was the basic backbone of everybody's life. और इसका इफेक्ट भी हम देख सकते हैं एक्चुअली. इसका इफेक्ट इतना अमेजिंग था. लाइक इफ यू रिमेंबर हाउ ब्रिटिशर्स when they came to our India, then we have that personality na, Lord Macaulay. Now he wrote one letter to the England Queen, Queen Elizabeth I or something like that. So he wrote one letter to the Queen Elizabeth saying that this country is so amazing, I'm not able to find even single beggar in the entire length and in the entire breadth of country. And in fact India को तो उस समय it was so opulent. India का नाम रखा गया था actually सोने की चिड़िया, like that. So now this is the effect of this spiritual culture, that everything, every aspect of our life becomes very prosperous. इसलिए actually हम लोग मतलब जिन लोगों ने spirituality बहुत genuinely लाइफ में फॉलो किया है ना, आप कभी उनसे सुन के देखिएगा. Those people who have really genuinely followed spirituality in their life, their realizations are so deep and they are able to see that how spirituality is able to help in every sector. ऐसा नहीं है कि मैं अगर सुबह को अपने हाथ में कोई माला लेके बैठता हूँ या फिर अगर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करता हूँ तो वो मतलब ऐसा अगर हम अगर इफ वी सी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी कांट सी कि वो कैसे मेरे लाइफ को अफेक्ट करेगा, like that. But it is affecting every sphere of your life. If you are chanting Hare Krishna Mahamantra, it will going to help you in maintaining your focus. It will going to help you in maintaining your willpower. और आप देखते रहेंगे कि आपका जो स्टडीज का फोकस है ना, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा एक्चुअली. मतलब आप चैंट तो कर रहे हैं, लाइक बोलते हैं ना स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तो आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी लाइफ के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में हेल्प करती है. लाइक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है, स्क्रिप्चर्स में आता है, व्हेन वी वाटर द रूट्स ऑफ द ट्री. अभी जैसे एक पेड़ है, तो अगर आप इस पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे, इफ यू इन्वेस्ट वाटर इन द रूट ऑफ द ट्री, देन ऑल द ब्रांचेस, ऑल द ट्विग्स, स्टेम्स, ब्रांच एंड एवरीथिंग ऑफ द ट्री, लीव्स, दे गेट अल्टीमेटली नरिश्ड एक्चुअली. उसका रीजन क्या है ना, क्योंकि रूट के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर आप उस पानी को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पानी अल्टीमेटली पहुंच जाता है. दिस इज द मैकेनिज्म बाय नेचर. Similarly, the mechanism made by God is that anybody who takes to spirituality, who invests some time in spirituality, then that spirituality is able to help in all other sectors, all other factors, I would say, of his life also, like that. It's very, very special. Yeah, so I was telling you कि जैसे हम गांव में जाते हैं तो सबका हैबिट होता है राम राम बोलने का, या फिर अगर किसी आप जैसे स्टेट में जाएंगे, गुजरात वगैरह में, they start their conversation saying जय श्री कृष्णा, like that. So people have, if you go in Vrindavan, people say Radhe Radhe, like that. So now this is the innate culture, like that. वो है मतलब innate culture, especially if you talk about India, like that. Yeah, so I was sharing with you कि कैसे ये जो रामायण है ना, इससे हम क्या सीख सकते हैं. एक जो हम बहुत अच्छी चीज आज देखने वाले हैं, that is the secret of life balance. क्योंकि आपके लाइफ में भी अभी आगे चल के और अभी भी you will face so many situations where you will need someone to help you, like that. Means वो ऐसी होंगी सिचुएशन जहां पे अल्टीमेटली जो आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास पावर है, that may appear to be insufficient, कि मतलब आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, like that. And actually Ramayana is such amazing epic from which we can learn this amazing art. Now अभी आप बोल सकते हैं कि लाइफ बैलेंस तो मुझे ही करना है ना, क्योंकि अभी ये मेरा लाइफ है, अभी मैं स्टडी नहीं करूंगा तो मार्क्स कहां से आ जाएंगे. या दैट्स ट्रू, लेकिन बहुत बार ऐसी आती है लोगों के लाइफ में सिचुएशन दैट दे आर नॉट एबल टू एंडेवर आल्सो प्रॉपर्ली, लाइक दैट. कहने का मतलब कि वो उनके पास डिजायर तो है, वो चाहते हैं लाइफ बैलेंस करना, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू डू इट, लाइक दैट. नाउ हाउ टू डू इट इज अ आर्ट.
नाउ अभी आप जैसे देखते हैं ना कि कोई कोई स्केचिंग करता है बहुत अच्छा, सो नाउ और मे बी समबडी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, सो नाउ ही नोज द आर्ट टू मेक इट लाइक दैट. उनको आर्ट आता है, हाउ टू यूज द ब्रश, हाउ टू पेंट एंड हाउ टू स्केच एंड ऑल, सो ही नोज द आर्ट. Similarly, this life balance also is a art, and we have to learn it. Like it's not that कि कुछ लोगों में ये है और कुछ लोगों में नहीं है. It's not like that. This life balance, it's a art actually, and we can very nicely learn it from the pages of Ramayana. तो मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ जो रामायण के पेजेस है हमारे. Yeah. So now the first and the foremost character of Ramayana is Lord Shri Ramachandra, like that, and everybody knows Lord Ramachandra is very very famous actually. In fact, if you speak about Srimad Bhagavatam, अभी आप लोग कहेंगे कि जैसे जो Vaishnavas हैं, they follow Srimad Bhagavatam like that. Now even in Srimad Bhagavatam, when Shukdev Goswami, he is explaining to Parikshit Maharaj, like you might be knowing what is the background of Srimad Bhagavatam, how it came up. Parikshit Maharaj, he is asking some questions to Shukdev Goswami, and Shukdev Goswami is answering those questions like that. और उसी चीज को जो व्यासदेव है उन्होंने लिख दिया है भागवतम की फॉर्म में. The same thing he has like written like that. So now उसमें शुकदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज है उनको बोलते हैं कि my dear king, my dear महाराज परीक्षित, you have heard Ramayana already so many times in your life. Why he is telling like that? Because people have culture of hearing about Lord Ram anyways like that, because it is such amazing epic and all that like that. So Shukdev Goswami is telling you have already heard it many times, so I will not invest so much time on this aspect of Lord Ram to explain. So that's why you see in Srimad Bhagavatam we have only 3 chapters. It comes in 9th canto if you go, only 3 chapters explaining the character and pastimes of Lord Ramchandra. और उससे पहले शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं इनको इतने कम शब्दों में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में सब कुछ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन हियरिंग अबाउट लॉर्ड राम एवरी सिंगल डे लाइक दैट. सो द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड राम इज what do we say, needs no introduction, everybody knows it, but for all of our discussion today, I have read a shloka here actually. I don't know how many of you know this shloka. Anyway, we'll try to discuss this shloka. It's a very beautiful shloka. It comes in Ram Raksha Stotram like that, and it comes in Chaitanya Charitamrita also. Shri Chaitanya Mahaprabhu quoted this shloka like that, and it came originally in Ram Raksha Stotram like that. It says, Ramante yogino nante satyanande chidatmani iti rama pade nashu param brahma vidhiyate. Maybe just give me a second, I'll quickly see. I was seeing this shloka. This comes in Ram Raksha Stotram or where? Okay, it comes in Satnam Stotra. Okay, it's not in Ram Raksha Stotra, it's in Satnam Stotra. Yeah. So it says, Ramante yogino anante satyanande chidatmani iti rama pade nashu param brahma vidhiyate. Now अगर आपको भगवान राम का डेफिनेशन जानना है तो ये श्लोक है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक्चुअली. इसमें लिखा गया है रमनते योगिनो अनंते, मतलब भगवान राम जो है ना उनका अर्थ क्या है. अभी जैसे आप पूछेंगे कि राम जो नाम है उसका अर्थ क्या है, राम नाम का अर्थ है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर. मतलब राम वो व्यक्ति है जो सबको रमन देते हैं एक्चुअली. लाइक दैट वर्ड राम, इट केम फ्रॉम रमनते. जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं ना, जिस श्लोका में भी फर्स्ट वर्ड रमनते ही है. इसका मतलब है वन हु गिव्स प्लेजर, वन हु इज अ रिजर्वायर ऑफ प्लेजर लाइक दैट. सो इसलिए भगवान राम जो ही शब्द है ना राम, इसका असली मतलब है द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर और रमनते लाइक दैट. तो ये जो श्लोका है इसमें बोल रहे हैं कि रमनते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि. हाँ, इट सेज रमनते योगिनो अनंते. जो योगी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, मुनि होते हैं, योगीज होते हैं, रमनते, दे टेक प्लेजर इन व्हाट? अनंते, इट्स अनलिमिटेड एक्चुअली. इट सेज that this name of Lord Ram is actually unlimited. It says ramante yogino anante satyanande chidatmani, and that pleasure is actually real pleasure. Satya anande, it's a real pleasure. It's satya anand, satyanande chid atmani, और उसका जो नेचर है वो क्या है? स्पिरिचुअल. चिद आत्मनि it says, and then iti rama pade nashu. और वो ये जो सारा प्लेजर है ना ये कहाँ स्टोर है? इति राम पदे नाशु. एंड देन द लास्ट लाइन सेज परम ब्रह्मा अभिधीयते. जो ये वर्ड है अभिधीयते, इसका मतलब होता है इज कॉल्ड, उनको ऐसा कहा जाता है, अभिधीयते लाइक दैट. आपने ये वर्ड और भी बहुत जगह सुना होगा, लाइक गायत्री मंत्र में भी आता है दिस वर्ड नो,
अभिधीयते, इसका मतलब होता है इज कॉल्ड, लाइक दैट. तो नाउ वो सुप्रीम रिजर्वोयर का प्लेजर, जिसमें जो योगीज भी हैं, बहुत बड़े बड़े योगीज मुनीज, उन लोगों को भी आनंद आता है. जो ऐसे लोग हैं जो खुद में सेटिस्फाइड है, उनको आनंद के लिए कहीं बाहर से आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे लोग भी भगवान राम में बहुत आनंद लेते हैं, ऐसे बोल रहे हैं. और उस व्यक्ति का नाम क्या है? राम. इट सेज इति राम पदेनाशु परम ब्रह्मा विधीयते, लाइक दैट. सो इट मींस that Lord Ram means he's a reservoir of pleasure. Now, my dear friends, all of you might be knowing the entire episode as it goes, how in Ramayana it came, no, that how Lord Ram is loved by everyone in Ayodhya. In fact, when Lord Ram came into the picture of the Ayodhya, like when Dashrath Maharaj, he did that Putra Kamishti Yagya, and then he got the 4 sons and all. Long story cut short, like that. And then how it goes, that when Lord Ram came into the picture of Ayodhya, everybody used to love Lord Ram very much. In fact, they can't imagine their day without seeing Lord Ram, without talking about Lord Ram, without hearing the voice of Lord Ram, like that. Everybody used to love Lord Ram very much. And all of you know what actually happened by the what we say conspiracy of mantra and the words of Kekai. Dashrath Maharaj has to tell Lord Ram to go to forest, and everybody was crying bitterly. Actually, it is told, like अगर आप वो रामायण read करेंगे, उसमें आता है that it is as if the life of all the people of Ayodhya is going away. Like जैसे हमारे जैसे आप अपने लाइफ को भी देखें ना, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज क्या होती है? हमारे प्राण. बोलते हैं ना लाइक जिंदगी प्यारी है, लाइक दैट वी से नो. तो हम लोगों के लिए भी जो सबसे प्रिय चीज है वो क्या है? हमारे प्राण. मतलब हमारा जीवन, हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत प्रिय है, लाइक दैट. लाइक दिस फॉर ऑल द अयोध्या वासीज, लॉर्ड राम वाज देयर लाइफ, लाइक दैट. इट कम्स इन रामायण कि कैसे जब भगवान राम वहां से जा रहे थे अयोध्या से, व्हेन ही वाज बीइंग बैनिश्ड टू फॉरेस्ट, एक्साइल्ड, लाइक दैट. सो दैट टाइम एंटायर अयोध्या वाज ड्राउन्ड इन सोरो. इनफैक्ट ऐसा एक्सप्लेनेशन आता है, आप लोगों ने रीड भी किया होगा, जब भरत अपने नाना जी के घर से वापस आ रहे थे, देन ही सो फ्रॉम अ डिस्टेंस अयोध्या, विच यूज्ड टू बी मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटी इन द हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड. एक्चुअली इनफैक्ट जो ये वर्ड है ना अयोध्या, इसका मीनिंग है कि ऐसा सिटी जिसको किसी ने डिफीट ना किया हो आज तक, उसको अयोध्या बोलते हैं, लाइक दैट. तो वहां पे आता है डिस्क्रिप्शन अयोध्या, जो कि ऐसा शहर था जो कि खुशियों से भरा हुआ था. It is that's the city of joy, like that. When Bharat he sees Ayodhya from long distance, he became shocked. Actually, he sees in Ayodhya everywhere there is fire and people are crying, and nobody's lighting their house, nobody's cooking food in their houses, and the entire atmosphere became surcharged with so much sorrow. Then he started crying seeing Ayodhya from long distance, and then he came, and जो पूरा आपका story आपको मालूम होगा how it goes. He came and he asked from his mother, अरे मम्मी क्या हुआ? And then she explains, you will be very happy to know that I have taken the kingdom for you. And he started crying, rolling on ground, that what you have done, my dear mother, what you have done. You have sent the life of entire Ayodhya Vasis to forest. That is Lord Ram, and that's how the thing goes. So yeah, I was explaining how Lord Ram is the life, actually, is the pran of all the people of Ayodhya, like that. And then when he was going up, everybody was crying so much. Yeah. So how what we can learn from the life of Lord Ram actually is the secret of life balance. Like if you see, my dear friends, if we have got life, then there will be difficulties in life. It is for sure. एंड इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि बस आपके लाइफ में ही आ रहा है डिफिकल्टी, किसी और की लाइफ में नहीं आ रहा है. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड फेसेस सम और अदर काइंड ऑफ डिफिकल्टीज. द नेचर ऑफ डिफिकल्टी मे वेरी, बट डिफिकल्टी हैज टू बी देयर. व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. लाइक मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फायर होती है ना, फायर, तो फायर का नेचर है दैट इट विल गिव हीट एंड लाइट. मतलब हीट एंड लाइट उससे आएगा ही आएगा. अगर आप फायर में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ऐसा किया कि आपका हाथ नहीं जलेगा फिर फायर में जाके. लाइक सिमिलरली इफ यू पुट फूड ऑन फायर, इट विल बी कुक्ड. व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ फायर. Similarly, the nature of this material world, हम जहां पर हैं अभी, if we see the practical situation right now, हम अभी जहां पर हैं, we are into this material world and we are having a life with us, right? We are living a life here. Now अभी हम लोगों को human form of species मिला है, तो हम सब human species में हैं.
might be कुछ आत्माएं हैं, there are some souls which don't have human species, they are into animal species of life, और हम भी कभी उस स्पीशी में थे, like that. Fortunately now we have got this human form of life by God's gift, by God's grace actually, like that. But in this life there are difficulties, but we have to learn this art of life balance. Now life balance basically means कि डिफिकल्टीज आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगे, डिफिकल्टीज हैज टू बी देयर. इवन इफ यू सी इन अयोध्या, now Ayodhya is a city which is mentioned in scriptures which has not faced any defeat in the past. ऐसी जो सिटी है उसमें भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, everybody is crying, the life has gone away, Lord Ram, like that. Now things can come, and similarly in the life of Lord Ram everything was going fine, but immediately a change came. Now he has to be there for 14 years in the forest, and forest means great difficulties actually. We don't have any fixed time for food, we don't have food at all first place, and then there is no security, there are so many animals in the forest, and there is no place to take rest, to comfort, to lie down, like that. So that means from the life of Lord Ram we can learn very well that how he faced difficulties in his life, and he remained very tolerant actually. His mind's composure didn't wavered at all. But now we'll discuss about a very special personality. तो मैं उसका आपको स्लाइड दिखाता हूँ. I am sure all of you will like this personality very much. Yeah, and that personality is भरत. Now आप सबने सुना होगा ऑलरेडी भरत के बारे में, हमने सुना है बहुत ज्यादा, उन्होंने इतना सहा था, इतना किया था, like that. Now if we'll discuss only few points on the life of Bharat which we can also apply in our life. Now who is Bharata? Now if you see the word, जैसे मैंने आपको राम नाम का अर्थ बताया, मैंने आपको अयोध्या नाम का अर्थ बताया, अभी मैं आपको ये जो भरत है इसका अर्थ बताता हूँ. ये जो भरत है ना, इसका मीनिंग है वन हु कैरीड अ हेवी लोड ऑन हिम एंड डिड नॉट क्विट द जर्नी. कहने का मतलब जो भरत है उसका मतलब है जो अपने सर पे बहुत भारी भार ढो रहे हैं, एक्चुअली उनको बोलते हैं भरता. भरता, वन हु इज कैरिंग अ वेरी हैवी लोड ऑफ वेट ऑन हिज हेड, बट ही इज नॉट क्विटिंग द जर्नी. ये हाईलाइट है, मतलब जैसे भार तो हम सबके सर पे भी होता है, लेकिन और सब लोगों के लाइफ में क्या होता है, दे क्विट द जर्नी, कि बस अब नहीं होता, नाउ लीव इट, लाइक दैट. But who is Bharata? Bharat is a personality who faced all the difficulties in his life, who underwent all the misconceptions of people, and he still continued his service to Lord Shri Ramchandra. So we'll see in the next slide. Who is this Bharata actually? Now, my dear friends, this personality Bharat, he represents, actually his entire life is a symbol of tolerance. Like आप ये जो फोटो है इसमें भी देख सकते हैं कैसे ये पास्ट टाइम भी, आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग ओनली हाउ लॉर्ड राम केम टू चित्रकूट. अभी वो पहले श्रृंगवेरपुर आए अयोध्या से, और फिर आए वो चित्रकूट में. अभी चित्रकूट में जब भरत अपने नाना के घर से वापस आए, देन ही केम टू नो द एंटायर एपिसोड एंड ही वाज क्राइंग वेरी बिटरली, एंड ही वाज एडमेंट दैट लॉर्ड राम इज द ओनली पर्सन हु इज befitting to be the king of this beautiful kingdom Ayodhya. I am not the right person, I cannot do it at all. He was thinking like that, and then he came to Lord Ram and he was fully convinced, I will take back Lord Ram to Ayodhya and he will be the king, and I will ask for forgiveness and all that he told. But finally, because Lord Ram was dharma parayana, he was the person who was a personification of emblem of dharma, like that. So he didn't budge an inch from his promise that he will go in forest for 14 years. तो जो भरत है वो क्या करते हैं, राम के जो पादुका हैं उनको लेके आते हैं और उनको जो सिंहासन है उस पर रखते हैं, राज सिंहासन पर रखते हैं, और he served those padukas and taking all the responsibilities of the king. So now what Bharat represents, actually his entire character represent tolerance. Now my dear friends, मतलब आप लोगों ने भी जितना लाइफ अभी तक एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस होगा कि दिस फैक्टर टॉलरेंस इज वेरी डिफिकल्ट, but it is most crucial. Like that. बहुत interesting actually. This quality of tolerance is most difficult. सबसे difficult है किसी चीज को सहना, like that. This quality of tolerance is most difficult, but it is most important. Now if you see the character of Bharat, like मैंने यहाँ पे कुछ points mention किए हैं, he never had the glory of not being misunderstood. कहने का मतलब जो भरत थे, उन्होंने किस एटमोस्फेयर में रह के अपना लाइफ जिया, और सिर्फ लाइफ नहीं जिया, एक्चुअली he served Lord Ram, the entire kingdom of Lord Ram, very faithfully actually. Like it is mentioned here, he never had the glory of
बीइंग नॉट मिसअंडरस्टूड, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था अयोध्या में जिसने भरत को मिसअंडरस्टूड ना किया हो. Everybody was talking every single day that he is the person who is involved in the conspiracy of sending Ram to forest actually. And because everybody used to like Lord Ram very much, they used to hate Bharat very much. Why? Because उनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि ये जो भरत है ना, ये इन्वॉल्व है उस षड्यंत्र में कि जो इन सब ने भगवान को भेजा है वहां पे एग्जाइल में, लाइक दैट. नाउ भरत, ही वांटेड टू एक्सप्लेन टू एवरीवन that I am not the person. I don't want to rule, he said. I don't want this kingdom. I want Lord Ram to be here. Like that. It is told that Bharat used to Lord Ram very much actually. Like that, from his heart. So he has to serve the kingdom under the misunderstanding of all the people. That he is the person, he is the culprit, and still he is doing the service. Now this thing is very difficult, my dear friends. Like I'll give you a simple example. अभी जैसे हमारे केस में भी होता है ना कि जैसे हमें कोई एक्यूज करे, हमें कोई कहे कि आपने ये किया है लेकिन हमने वो चीज नहीं की होती है, तो अंदर से बहुत ऐसा फील होता है. वी फील सो डिप्रेस्ड, वी फील सो मोरो सो डिमोटिवेटेड एक्चुअली कि अरे हमने नहीं किया है तो हमें क्यों एक्यूज किया जा रहा है उसके लिए. नाउ इन केस ऑफ भरत, ही इज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ सेंडिंग लॉर्ड राम, जिनको वो खुद बहुत प्रेम करते हैं. एंड एवरीबडी इन अयोध्या मिसअंडरस्टूड, मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था एक्सेप्ट शत्रुघ्न. Now Shatrughan was the only person who didn't misunderstood Bharat. He served Bharat in fact, like that. But everybody misunderstood. Now to work in such a situation is most difficult. He has to execute his responsibility where nobody is ready to cooperate with him, nobody likes him, and nobody don't want to see the face of him, like that, Bharat Maharaj. But still he is doing it like that. So now this thing is very difficult, but he did not left his service. Like that. तो एक तो ये पॉइंट है. एक दूसरा है सर्विस विच ही डोंट लाइक. नाउ भरत, एक्चुअली स्पीकिंग, भरत didn't wanted to become the king. From his heart he didn't wanted at all that I don't want any trace of kingly opulence, like that. Ram is the only person and he is the befitting person to be the king, like that. So now when Lord Ram told to Bharat that my dear Bharat, you have to be king for 14 years now, and then with a big stone on his heart actually he accepted that. Now this is very amazing, friends. Now if you see, now Bharat is doing something which he don't like to do, but why he's doing it? Out of duty, like that, because he's supposed to do that, because that is required on his part. He has to do it, like that. That is why he's doing it. Otherwise from his heart he didn't want it to do it at all. And then you have seen also in the episode of Ramayana how it goes. Bharat, he used to live in Nandigram, outside Ayodhya, और जो राजमहल थे उसमें तो कभी सोए ही नहीं भरत. He used to sleep underground actually. मतलब ऐसा बोलते हैं, Bharat used to think every time of Lord Ram that my dear Lord must be sleeping on ground. My dear Lord must be eating simply some bare fruit, some roots and all that. No cooked food at all or no tasty food at all. So Bharat also used to eat only roots. In fact, it is mentioned in Ramayana that because Lord Ram used to eat only fruits and roots, so Bharat accepted a lower standard. He accepted only roots. Because Lord Ram used to sleep on ground, Bharat used to sleep only underground. He used to dig up a pit in the ground and he used to sleep there because he cannot accept a position equal to his Lord Ram, like that. Such great austerities he has undergone. For whom actually? Simply for the pleasure of Lord Ram, like that. And similarly, you might be knowing this episode, he was not allowed to put fire to the body of his father when Maharaj Dashrath, he died actually in the entire episode, because he used to love Lord Ram also very much, and he cannot tolerate that separation from Lord Ram, Maharaj Dashrath. So he died in the due course, and Vishwamitra Muni, he told to Bharat that you can't touch the body of your father. You can't put fire to the body of your father. Why? Because he has told like this. That means Maharaj Dashrath also misunderstood Bharat. And now try to understand the situation of Bharat. Now Bharat is a personality who loved Dashrath very much. In fact, he was the person who used to live for these people, for his elder brother, for his father and all. He used to love Dashrath very much, and Dashrath passed away and Bharat could not explain his innocence. Now Bharat is completely misunderstood by the person whom he loved the most. Now Bharat loved Maharaj Dashrath very much. In fact, it is explained the most he used to love Maharaj Dashrath.
and that personality completely misunderstood him, like that. And then it is told that he used to get up early 1 o'clock in the morning and he used to go to Sarayu to take bath. और उसमें फिर आता है एक्सप्लेनेशन जो वाल्मीकि जी हैं वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि अगर वो बाद में जाते ना तो जितने भी अयोध्यावासी थे जब वो भरत को देखते थे, they used to throw stones at him that he is the person, and they used to start crying that he is the person who has sent our Lord Ram to forest, like that. So in this very difficult atmosphere actually, now if you see, Bharat means he is a real superhero. Now friends, हम लोग देखते हैं ना सुपर हीरो देखते हैं आजकल, बैटमैन, सुपरमैन, और इसने ये कर दिया, और हीरोज भी आते हैं आजकल बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हॉलीवुड में, like that. Actually they are nothing in front of the characters of Ramayana. Now you see Bharat, he is a real superhero. Why? Because he is executing his, जैसे हम लोग अपने लाइफ को देखते हैं, हम लोगों ने भी आईटी जेई का किया था थोड़ा सा प्रिपरेशन, और हमने और भी जगह और भी किए हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, अभी बीटेक के लिए हम एनआईटी में हैं, लाइक दैट, और अभी आगे भी थोड़े बहुत स्ट्रगल हमने देखे हैं। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस हम लोग का रहता है, जैसे ही आती है प्रॉब्लम तो हमसे चीजें छूट जाती हैं हाथ से, लाइक दैट, और छूटने वाली होती हैं, लाइक दैट। लेकिन इफ यू सी इन भरत, ही इज अमिड्स, मतलब वो इन सब के बीच में है। In this Ayodhya, nobody likes him. His father completely misunderstood him and he passed away. He has no opportunity to explain himself that, my dear father, I am innocent. I am not the person who is engaged in all this. He had no opportunity to explain and he passed away, like that. Amidst all these difficulties, he is still doing his duty. And the duty is which Lord Ram gave him, that you have to rule the kingdom for next 14 years. And he is ruling a kingdom where nobody cooperates with him. Nobody likes him. People throw stones at him when they see him. Now try to understand how he must have done. And I'll share one interesting fact with all of you. The treasury of the kingdom which Lord Ram left 14 years back, when he came after 14 years, it was increased to 10 times. Now can you imagine? Bharat did his responsibility so well amidst all the difficulties that he increased the treasury from whatever it was to 10 times. So by seeing this, Lord Ram became shocked actually, like that. So this is the quality of a servant. Now Bharat, he served so much amidst difficulties and to the best of his capability, like that. So now if you see from the life of Bharat, one secret we get from here actually, one secret of life balance, and the secret is tolerance. Now my dear friends, if you see, now ये जो tolerance word है ना, इसको ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी injustice हो रहा है उसको सहन करते रहो, उसको tolerance नहीं कहते हैं। टॉलरेंस कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से सारा एंडेवर लगा लिया, लेकिन अभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, सिंपली एक्सेप्ट इट एज द विल ऑफ गॉड, लाइक दैट। अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, लाइक दैट। और हमारे हाथ में जो चीजें हमने बहुत अच्छे से किया, सी वो भी टॉलरेंस का ही पार्ट है, कि हम जो अपने हाथ में चीजें हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस में चीजें हैं, उनको बहुत अच्छे से करना, और जो चीजें नहीं है उनको एक्सेप्ट करना एज अ विल ऑफ गॉड, like that. Now this is another secret of life balance. You see anybody who face difficulty in his life, अगर वो इस सीक्रेट को जान जाए कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, इसको टॉलरेट ही करना है, इस सिचुएशन का सक्सेस क्या है, इसको टॉलरेट करना है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दोज हु गो टू कोटा एंड दे वांटेड टू डू प्रिपरेशन फॉर आईटी जेई एंड जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, लाइक दैट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, उनको कुछ भी कॉलेज नहीं मिलता है। जैसे आप लोगों के भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनको आईआईटी में भी सीट नहीं मिलती है, एनआईटी में भी सीट नहीं मिलती है, और लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीट नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका लाइफ खत्म हो गया है और वो एकदम डफर है, उनको कुछ नहीं आता है। नो, इट्स नॉट द मीनिंग एक्चुअली। द डेप्थ ऑफ लाइफ इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का क्या है ना, जो सक्सेस का डेफिनेशन है ना, वो ही अलग है। हम लोगों को लगता है कि आईआईटी जेईई में सीट मिल गया तो ही सक्सेस है, और नहीं मिला तो वो फेलियर है। नाउ इट इज अ वेरी एक्सटर्नल व्यू पॉइंट। ये अगर हम देखें ना, ये बहुत एक्सटर्नल व्यू पॉइंट है, मतलब कि हमने जस्ट बाहर से देखा कि मैंने इसके लिए एंडेवर किया और ये चीज मुझे मिल गई और ये चीज मुझे नहीं मिली, तो यहाँ पे मैं सक्सेस हूँ और यहाँ पे मैं फेलियर हूँ। एक्चुअली में सक्सेस का डेफिनेशन वो है ही नहीं। if we are very mature in our life, if we have seen the depth of life, and you see in the life of all the great people, आप हिस्ट्री में से किसी का भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, बीट सचिन तेंदुलकर, बीट एपीजे अब्दुल कलाम, और बीट एनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी also, let's say Srila Prabhupada, beat any person in this world who has
who has gained sparkling success in his life, they have understood the depth of life. And the depth of life is that we have to do our part very nicely. In fact, the entire essence of Gita is also this. अगर आप जो गीता के पहले के 6 चैप्टर्स देखेंगे, उनका एसेंस ही है. एसेंस है कि जो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, वो सक्सेस का डेफिनेशन है कि अपना पार्ट अच्छे से करो, और फिर जो हमें मिलता है रिजल्ट, जो कि हमारे हाथ का नहीं है, ऑन दैट पार्ट विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, जो ऐसी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो. लाइक दैट, if we are able to do that, accepting it wholeheartedly with a happy heart, being fully satisfied, that's fine. We understand that it's world, and like IIT has got just some few seats, but if you see student every year 15 lakh student appear for entire engineering examination, but how many gets IITs? 10,000 maybe maximum. And then if we talk about NITs, another 10,000, 10-15,000, like that. But what to speak of the majority of people? Do everybody should commit suicide, or everybody is unsuccessful, everybody is a failure? No. The depth of life says that we have to do our part. See, that is in our hand. We have to do our part sincerely. If we have not done sincerely, then also we'll not be satisfied. But if you have done your part very sincerely, from your heart you can say, I have put my 100%. Now your 100% may be different from another person 100%, but you should be satisfied. As much as I could have done, my best I have given, like that. And your best may be different from another's best. That's fine. There is no issues in that. But you have to do your best and simply accept now whatever is coming in your life. That is the meaning of success. Now, what happens? Sometimes people are able to put their best, but they are not able to accept the result which came. That means they are unsuccessful. Now, there might be a person who might not have got into IIT. Now, let's take example. He has done very hard work. Let's say he has taken a drop from his 8th class. He has taken the dummy admission from 8th, 9th, 10th, 11th. He did complete thorough preparation. And somehow he could not get even a seat in IIT, what to speak of top IITs, like that, let's say. So is he unsuccessful? No. The definition of success is that he has done his part and he also have accepted the result by God. So if we can do these two things, then he is successful. Either he has got seat into IIT or not, that is not the platform of success at all. The platform is he has done his part and then he has accepted what life has awarded to him. That's how people can be very happy. And even though he might have taken admission into a regional college, let's say, he has not got IIT, he has not got NIT, he has just taken admission into some regional college, let's say, he'll be the person who will get the package more than a person studying in IIT also. तो आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, लेकिन उनका पैकेज, उनका इंटेलेक्ट, उनका स्किल इतना हाई होता है कि इवन IIT बॉय कैन नॉट मैच विद हिम. एक्चुअली होता है, वी कैन सी, वी हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. तो ये किन लोगों के साथ होता है ना? Those who are successful. और जो सक्सेस का मतलब है doing your endeavor very nicely plus accepting what life has offered to us, उसको एक्सेप्ट करना होल हार्टेडली, लाइक दैट. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक्चुअली में सक्सेसफुल होते हैं. मतलब जो अल्टीमेट एम है, देखो अभी IIT भी किया तो उसका एम क्या है? अभी आपने मान लेते हैं, अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो मैं MNIT में आया था तो मैं बहुत खुश था कि मैं टॉप NIT में हूं और सब कुछ बहुत अच्छा है. बट आफ्टर 4 years now I am passed out in 2019. ऑलरेडी 2 years have passed. तो अभी इतना ज्यादा क्रेज नहीं है कि मैं MNIT से पास आउट. अभी किस चीज का क्रेज है? मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हाउ मच पैकेज आई है, अभी उस चीज का क्रेज है. मतलब वो जो पूरा स्टडी किया उसका एसेंस उसको मिल गया ऑलरेडी. नाउ ही माइट हैव स्टडीड इनटू रीजनल कॉलेज बट ही हैज गॉट अ वेरी गुड पैकेज एंड ऑल, लाइक दैट. So you understood? Sorry, I have taken a bit extra time to explain this concept, but I think it's a very crucial concept for all of us. Being as a student, now अभी हम लोग का जो सक्सेस का डेफिनेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए actually, that we have to do our part 100%. We should be completely satisfied from our heart that I have done my part perfectly, no issues now. And उसके बाद जो भी आता है accept it happily, क्योंकि आपने अपना पार्ट अच्छे से किया. अभी माइंड से सारा टेंशन निकल जाना चाहिए कि अब जो भी मुझे लाइफ देगा, जो भी मुझे भगवान देंगे, आई विल एक्सेप्ट इट. That's it. अगर हमारा ये एटीट्यूड रहता है ना, then you will see that you will be the person who is growing in your life at leaps and bounds actually. मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जो आपको रोक सकेगा. This is the secret of life. और यही जो गीता है उसके फर्स्ट 6 चैप्टर का एसेंस भी यही है, like that. और ये हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं from the life of भरत. We can see. Maybe we are almost done with time. I'll take 5-10 more minutes. I'll quickly cover one more very special character, like that. ठीक है, तो ये हम सीख सकते हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ भरत महाराज. या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी मैं इस पे फोकस करना भूल गया. इट इज सेड, आई वांट टू डू इट. आप लोग
देखेंगे लाइफ में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ऐसा बोलते हैं, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट मैन, आई जस्ट लाइक इट, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, लाइक दैट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं उनके लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं आई कैन डू इट। लाइक जो ऐसे लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू इट, मतलब उनका हार्ट इन्वॉल्व है उस चीज में। लाइक आई गिव यू एग्जाम्पल, अगर किसी को कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है हाउ टू मेक डिशेज इन द किचन एंड ऑल, देन वो क्या बोलेंगे अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुकिंग का, आई वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज उनका हार्ट इन्वॉल्व है वहां पे। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं आई कैन डू इट। नाउ ऐसा हम किस टर्म्स में बोलते हैं, जहां पे हम उस चीज को वी डोंट वांट टू डू इट, बट वी सी फ्रॉम आवर हेड आई कैन डू इट, लाइक दैट, आई कैन डू इट। सो जो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ना, आई वांट टू डू इट, उसमें हार्ट इन्वॉल्व है, आई कैन डू इट उसमें माइंड इन्वॉल्व है। लेकिन जो थर्ड वाला सेंटेंस है ना, आई विल डू इट, उसमें हमारी ड्यूटी इन्वॉल्व है एक्चुअली। इवन दो वी डोंट वांट टू लाइक टू डू समथिंग, बट वी नो आई हैव टू डू इट, इट्स गुड फॉर मी, आई एम सपोज टू डू इट, एंड वी स्टिल डू इट। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है ना, इसमें हमारी विल पावर इन्वॉल्व है। तो अगर आपको देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन है, जो कि ऐसे मतलब ही डूज दोज थिंग्स इवन इफ ही डोंट लाइक इट, बट दोज थिंग्स आर गुड फॉर हिम। लाइक वी सी द एग्जांपल ऑफ भरत महाराज, he don't wanted to rule the kingdom at all, but he said I will do it. Why? Because he's saying out of his willpower, even though I don't want to do it, and then he's not also saying I can do it, he said I will do it. Why? Because I don't want to do it, but I will still do it out of my duty. This is another secret of life balance. अगर आपको देखना है कि हमारा लाइफ कैसे बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकता है, उसका एक और अलग सीक्रेट है, और वो है our willpower should be very strong. I will do it, even though I can do it, I don't know, I want to do it, no I don't want to do it, but I will still do it because it is good for me and I'm supposed to do it, like that. इस तरीके से मतलब, तो this is also very very crucial aspect. चलो मैं आपसे एक यहाँ पे भी I will share one secret with all of you. Now all of you must be thinking कि ठीक है ये हमने जान तो लिया, पर इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कि मान लिया भाई कि जो विल पावर है वो बहुत क्रूशियल है। अच्छा फ्रेंड जस्ट एक सेकेंड। हाँ या सो आई वाज टेलिंग यू कि आप लोग अभी मेरे से बोल सकते हैं कि सर आपने बोल तो दिया कि आई वांट टू डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मतलब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये सबसे डिफिकल्ट है एंड इट रिक्वायर्स मैक्सिमम विल पावर। मतलब किसी व्यक्ति में सही में दम होगा ना, इफ अ पर्सन रियली हैज ग्रेट स्ट्रेंथ इन हिमसेल्फ, in his mind, then only he can say I will do it, like that means out of duty, out of responsibility he is doing that. Now my dear friends, now you can ask me कि सर उसको लाएं कैसे, मतलब हाउ टू इंक्रीज दिस विल पावर। अभी ये विल पावर ठीक है कुछ हद तक है हम में, बट वो इतने अच्छे लेवल का नहीं है। हाउ टू इंक्लूड इट इन आवर पर्सनैलिटी। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है एक्चुअली, एंड द वे इज इफ यू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्रा। Actually speaking, the main effect of Hare Krishna Mahamantra is love of God, मतलब वो spiritual actually, it's a spiritual sound vibration. लेकिन इसका एक और बहुत main effect है, और वो है you get tremendous willpower. Now, if you want to check this in your life, you can check it. I can write down and give you. I can write down and give you. आप लोग ना रोज सुबह 2 राउंड चैंट करने का टाइम निकालो, और अगर आप ऑलरेडी 2 से ज्यादा चैंट कर रहे हो तो उसका टाइम निकालो, बट मिनिमम आप 2 राउंड का टाइम निकालो सुबह चैंट करने का, एंड यू ट्राई टू ऑब्जर्व योर लाइफ आफ्टर 1 मंथ। आप जस्ट इस चीज को 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एंड आई कैन राइट डाउन एंड गिव यू विल फाइंड sparkling difference in your own personality. Actually you will find that those things from which you used to fear very much, अरे मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये चीज तो मेरे से होती ही नहीं है, you will develop so much willpower that even though those things are difficult for you, but because those things are good for you, you will do it. इसी को बोलते हैं विल पावर, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं संकल्प शक्ति। चैंटिंग जो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करता है, उसका एक मेन इफेक्ट ये भी है एक्चुअली, लाइक बोलते हैं ना कि हमारा हृदय साफ होता है, तो वो सब इफेक्ट हैं, लेकिन इसमें एक और बहुत मेन इफेक्ट है, एंड दैट इज हमारा विल पावर बहुत बिल्ड होता है, लाइक दैट। इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट। आप 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए, हर रोज सुबह आपको सिर्फ 2 राउंड चैंट करने हैं, and you try to observe your life every day. Actually you will find your willpower will 100% grow, like that. तो जस्ट एक पॉइंट याद आ रहा था इसलिए मैं शेयर कर रहा था। हम बस एक और जो पर्सनैलिटी है उनको और देखते हैं, एंड ही इज लक्ष्मण। नाउ आई विल नॉट टेक मच टाइम, एनीवे ऑल ऑफ यू नो अबाउट लक्ष्मण जी, सो आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन यू कि ये जो लक्ष्मण है ये कौन है असलियत में। नाउ इनका डेफिनेशन आता है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लाइक दैट।
कहने का मतलब जो लक्ष्मण है ना, दिस वर्ड लक्ष्मण, इट केम फ्रॉम द वर्ड लक्ष्मी. नाउ जो लक्ष्मी वर्ड है ना, उसका जो बेसिक मीनिंग है वो है वेल्थ, मतलब ऑपुलेंस जिसको बोलते हैं ना, ऐश्वर्य, वेल्थ जिसको बोलते हैं. जो लक्ष्मी है उनका वो ये वर्ड से लक्ष्मण शब्द आया है, फ्रॉम लक्ष्मी. नाउ अभी अभी बोलते हैं लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो. अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि उनके पास किस चीज की लक्ष्मी है, वो विच वेल्थ ही हैज एक्चुअली. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी, लक्ष्मण हैज द वेल्थ ऑफ सर्विस. नाउ उनके पास किस चीज का वेल्थ है ना, किस चीज का उनके पास खजाना है, वो खजाना है सेवा का खजाना. he has lot of service and he has rendered that service to Lord Shri Ramchandra. Now I will tell you a brief incident. Maybe I have written in the slide also. Yeah, it is told that Lord Ram is the life force for Lakshman. मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ना, कैसे जितने भी अयोध्यावासी थे उनके उनके जो प्राण थे ना, जैसे आत्म कहते हैं, सोल जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली में लॉर्ड राम थे. तो इसलिए जब लॉर्ड राम दूर जा रहे हैं ना, तो उनको बहुत पेन हो रहा है हार्ट में. लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो आप लोगों ने, किसी ने न्यू फोन खरीदा है, किसी ने कोई नया फोन खरीदा, लेट्स से एप्पल आईफोन यू हैव परचेज्ड. अभी किसी बाय मिस्टेक दैट आईफोन ड्रॉप्स, यू आर देयर ऑन द फोर्थ फ्लोर of some building and it dropped from there somehow from your hand, you are talking like that, वो छूट गया हाथ से. Now you have purchased a new iPhone of let's say 80,000 and it dropped from your hand. How much pain it gives actually. My God, अभी तो खरीदा था and then it is completely smashed like that. So now ऐसा क्यों हो रहा है? Because we identify with it. हमारे जो थोड़ा लाइफ है ना, थोड़ा प्राण जो है उसके साथ भी एसोसिएटेड है like that. Similarly, entire प्राण ऑफ अयोध्यावासी, स्पेशली ऑफ लक्ष्मण जी, जो लक्ष्मण जी के सारे प्राण हैं वो भगवान राम ही हैं. इसलिए जब भगवान राम को एग्जाइल जाने का बात हुआ ना, देखिए अगर आप देखेंगे तो असलियत में भगवान राम को ही एग्जाइल जाने का प्लान हुआ था. ऐसा थोड़ा ना हुआ था कि जो सीता है वो भी साथ में जाएंगी, लक्ष्मण भी साथ में जाएंगे. सिर्फ भगवान राम को जाने का प्लान था. तो अगर आप देखेंगे, अभी अभी कोई आज के वर्ल्ड का कोई व्यक्ति होता तो ऐसा बोलता, मतलब वो बाहर से बोलता कि अरे अब भैया आपको एग्जाइल जाना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे भी बताइएगा, मैं इधर ही रहता रहूंगा अयोध्या में. बट पीपल फील हैप्पी इनसाइड कि चलो ठीक है, आराम करेंगे 14 इयर्स के लिए. एटलीस्ट फ्रॉम देयर हार्ट दे आर वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट दिस पर्सन इज गोइंग अवे. भले ही वो भाई क्यों ना हो, आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन इफ यू सी लक्ष्मण, ही इज हैविंग सो मच पेन इन हिज हार्ट. उनको वो जैसी न्यूज मिली ना कि भगवान राम को एग्जाइल मिल गया 14 इयर्स के लिए, ही वाज कंप्लीटली शैटर्ड फ्रॉम इनसाइड. एंड देन ही सेड, ब्रदर आई विल कम फॉर श्योर. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं यहाँ पे रहूं, मैं आपकी सेवा के लिए आऊंगा ही वहां पे. लाइक दैट. दैट मीन्स लॉर्ड राम इज हिज लाइफ. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सटर्नली बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको फॉरेस्ट में जाना है देन ही हैज टू शेयर द सेम लाइफ व्हिच लॉर्ड राम इज गोइंग टू लिव. और अगर आप लक्ष्मण जी का लाइफ देखेंगे, हिज लाइफ, द वे ही लिव्ड हिज लाइफ इज इवन मोर ऑस्टियर देन द वे लॉर्ड राम एंड मदर सीता लिव्ड. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जब फर्स्ट टाइम लक्ष्मण जी ने देखा कि जो भगवान राम और जो मदर सीता हैं वो जमीन पे सो रहे हैं, तो उसको देख के वो अपने आंसू नहीं रोक पाए एक्चुअली. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि जो मदर सीता है, शी इज सो टेंडर, शी नेवर केम आउट ऑफ द पैलेस एक्चुअली, and now she is into forest, into all these hardships. And similarly Lord Ram is the person, he's the prince actually, and he used to sleep on a very very beautiful beds with very soft cushions like that. And he's seeing now he's sleeping on ground in the forest. Seeing that, Lakshman took one vow actually. He said that I am not going to sleep for next 14 years. Now in these next 14 years, because my Lord has to sleep on ground, I will take a vow that I will not sleep at all. And Lakshman ji didn't eat also anytime. He used to bring fruits, he used to do all the what we say preparation for Sita Ram like that, but he never ate himself. He never slept for 14 years, he never ate, seeing that his Lord has to eat all that like that. That means Lord Ram is really prana for him, for Lakshman ji like that. Yeah, and also you see that यहाँ पे भी एक सीक्रेट एक्चुअली, द सीक्रेट ऑफ लाइफ बैलेंस इज देयर. एक बहुत अमेजिंग सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड्स, आई विल शेयर विद यू. द सीक्रेट ऑफ लाइफ बैलेंस इज दैट वी शुड हैव अ गोल इन आवर लाइफ. देखिए मतलब हम लोग अभी बात कर रहे हैं लाइफ बैलेंस की, कि हमारा लाइफ बैलेंस होना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए. पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है लाइफ बैलेंस क्यों करना चाहिए, उसका क्या गोल है. मतलब मैं लाइफ बैलेंस किसके लिए कर रहा हूँ. लाइक मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. अभी आप मान लेते हैं आप ड्राइव कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू डोंट हैव एनी डेस्टिनेशन विद यू.
अभी आपके पास कुछ भी डेस्टिनेशन है ही नहीं, कि मान लेते हैं कि अभी आप दिल्ली में हैं एंड यू हैव टू गो टू हैदराबाद, मतलब इतनी दूर तो शायद नहीं जाएंगे कार से, पर मान लेते हैं कि आप दिल्ली में हैं एंड यू हैव टू गो टू हैदराबाद, सो यू हैव अ रूट फॉर इट, राइट, like that. So now you are driving and you have a GPS, you have kept location in Hyderabad, let's say you have kept some place in Hyderabad, abits Hyderabad, like that. So now you are driving based on the goal in your mind that I am driving for that. Similarly in our life, if we are doing life balance, first of all we should know for what we are doing life balance, what is the goal of my life, like that. So now if we have that goal clear, then difficulties will come surely. Like अगर आप दिल्ली से हैदराबाद ड्राइव कर रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगे, कहीं पे बहुत सारे गड्ढे आएंगे, कहीं पे बम्प्स आएंगे, कहीं पे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कहीं पे टोल्स आएंगे, यू विल गेट सो मेनी impediments in between to reach Hyderabad. But because your goal is clear and impediments are coming, that's for sure, because in this world we are there, impediments will be there, but because at least we have a goal with us, then we'll progress. तो एक्चुअली में जो सीक्रेट है ना लाइफ बैलेंस का, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट वी शुड सेट द गोल ऑफ आवर लाइफ इनटू द जीपीएस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लाइफ का जीपीएस है उसमें पहले हम गोल सेट करें, लाइक दैट, एंड उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो हम लाइफ बैलेंस कर पाएंगे, लाइक दैट. सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बैलेंस, दैट द पर्पस फॉर विच वी आर डूइंग लाइफ बैलेंस शुड बी वेरी क्लियर, लाइक दैट. तो अभी आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू सम कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन यू आर डूइंग एनीथिंग यू कैन अप्लाई, बट स्पेशली फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, लाइक दैट. या सो आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू ऑल दिस. और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ बैलेंस का, एंड दैट इज बीइंग ड्यूटीफुल. या तो यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाया है व्हेन लॉर्ड राम एंड मदर सीता was married. So ऐसा बोलते हैं कि when Lord Ram and Mother Sita was married, that was the most happiest moment for the entire creation. जब भगवान राम और मदर सीता का शादी हुआ, that was the most beautiful and most joyful moment for the entire creation, like that. And yeah, अभी जैसे आप इस फोटो में देखेंगे तो इसमें जो लॉर्ड राम है, he is going away now. He is going to forest. He has taken the वेश of a वनवासी. उन्होंने सब वो पहन लिया था, धोती वगैरह, और अपने जो भी ऑपुलेंट कपड़े थे, जो राजमहल के कपड़े थे, वो सब उतार के जो ये वन में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके कपड़े पहन के ही इज लाइक रेडी टू गो, लाइक दैट. एंड एंटायर अयोध्या इज इन सो मच पेन एक्चुअली, लाइक दैट. ऐसा बोलते हैं कि द बैलेंस, क्योंकि हम ये वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट ऑफ लाइफ बैलेंस, इट इज टोल्ड दैट द बैलेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ एंटायर अयोध्या is gone. Why? Because the goal of their life, that is Lord Shri Ram, has gone away from them. And the same balance again came, but what they did by that time, they tolerated it with dutiful attitude. Like जैसे मैंने आपको बताया ना, जो महाराज भरत हैं वो क्या represent करते हैं? Tolerance and dutiful nature also. At the same time doing responsibility, tolerating the problems, like that. Then when Lord Ram came back to Ayodhya, again after 14 years of exile and then defeating Ravana and all, तो जब वो वापस आए तो जो अयोध्या वासी थे उनका लाइफ का बैलेंस फिर से वापस आ गया, लाइक दैट. सो एक्चुअली ये जो हमारा फेस्टिवल है दीपावली, ये इसका एसेंस अगर आप देखेंगे ना, इसका एसेंस क्या है? द एसेंस ऑफ दीपावली इज एक्चुअली दैट आवर लाइफ बैलेंस अगेन केम बैक. मीन्स अभी जैसे हम लोग के लाइफ में तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इफ यू सी द न्यूज़पेपर एवरी डे, इफ यू सी द पीपल अराउंड, people are actually very miserable in their life. The balance, the satisfaction, the thing which should be there is not there, like that. तो मतलब जो दीपावली का एक्चुअल एसेंस है ना, वो क्या है? that we have to bring back our life balance. कि जैसे अयोध्या वासी जो थे उनके लाइफ में फिर से बैलेंस आया when Lord Ram again came back. लेकिन उस टाइम तक उन्होंने क्या किया? जब प्रॉब्लम्स थी तब उन्होंने क्या किया? They tolerated the problems and they did their responsibility as best as they could, like that. So this is the essence of Diwali also. Thank you so much. Maybe I'll stop here. Yeah, I told you in the beginning that you have to tell me the name of the session what we have discussed today. So any inputs from your side? आप में से किसी को कुछ भी कोई नेम लगाओ कि हमने जो भी डिस्कस किया उसका हम क्या नाम दे सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एसेंस ऑफ दीपावली एंड द सीक्रेट ऑफ लाइफ बैलेंस. कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगाओ कि हमने क्या डिस्कस किया, उसको अगर आपको एक वर्ड में करना हो समराइज. लर्निंग फ्रॉम रामायणा's characters. Okay. Thank you Utkarsh. Correct. Learning from Ramana's character, and you can mention also especially Bharat and Lakshman, like that. Lakshman. Yeah.
Anyone else? Any phrase you would have designed?